to compute, and B is already given to us, which is 100 kilohertz. So 2 into n is equal to 100 kilohertz, and n will be 100 divided by 2. 2 will come to the right hand side, and because n is always measured in bits per second, not in kilohertz, so that will be 50 bits per second. Is that clear to all of you now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Carrier frequency in case of BASK, that is binary amplitude shift keying, will be always in the middle of the spectrum. And so bandwidth जो आपकी है और उसकी range भी हमें दी हुई है, span दिया हुआ frequencies का, that is 200 kilohertz to 300 kilohertz. So उसका जो middle है, that is mid of 200 and 300 is 250 kilohertz. So frequency of the carrier will always be in the middle of a binary ASK spectrum. So that will be 250. So that's how we computed FC as 250 kilohertz. And we knew the formula of bandwidth, and we substituted the values of S, N, R, and D, and we got the values of all the variables. Now, example 5.4, in data communications, we normally use full duplex links with communication in both the directions. So we need to divide the bandwidth into two with two carrier frequencies as shown in the figure 5.5. Now, because we have to not only communicate the data, or we don't have to send the data only from one computer to the other one. So now suppose I am communicating with my friend, and so I need to send the email, or I need to send the data also, and I have to receive the data simultaneously. So, or I am just sending the text message from my phone, and I have to receive the text message, or maybe through messengers we are sending the messages, we are exchanging the messages. So basically, while doing full duplex communication, I'll be needing two different channels, two different frequency channels, so that one channel can be used from sender to the receiver and one that in the reverse direction. So the entire bandwidth of the previous example, 200 kilohertz to 300 kilohertz, that will be divided into two parts. So at 250 kilohertz will divide the entire frequency spectrum, and 50 kilohertz bandwidth will be used by the up channel, that is the sender to the receiver, and in the reverse direction from receiver to the sender, for reverse communication, we will be using 50 kilohertz of bandwidth. So there will be two bandwidths, 50 kilohertz for the up channel, 50 kilohertz for the down channel. And for each, we will be using two carrier frequencies, FC1 and FC2, in this particular bandwidth spectrum of 50 kilohertz. So the FC1 will be located at the mid of 200 to 250 kilohertz. This is for the up channel. And FC2 will be located at the mid of the 250 kilohertz to 300 kilohertz bandwidth channel. And the middle of 200 to 250 will be 225. So FC1 will be 225 kilohertz. And FC2 for the down channel will be between 250 and 300, that is 275 kilohertz. So this is one of the examples of full duplex transmission. Now then we have multi-level ASK, where we can use R is not equal to 1 here. We can have multiple signals to represent different signal elements, different carrier frequencies. So R is not 1, R is 2, 3, 4. We can have any number of data which we can send through it. So we can use 4, 8, 16 or different simple, different amplitudes for the signals and modulate the data using 2, 3 or more bits at a time. So if we are using 4 different amplitudes for representing different signals, so that we will be having 4 different signal elements. That way we will be representing 2 bits per signal. Is it okay if we are having 4 different signal levels, if we have 4 different amplitudes? Instead of now on-off keying, amplitude keying, if we have 4 different amplitudes, A1, A2, AC and A4. Sorry. So what will happen? A1 will be representing 2 bits, 0, 0. A2 will be representing 0, 1. AC will be representing 1, 0. A4 will be interpreted as 1, 1. So using 4 different amplitudes, we can send 2 bits per signal. Similarly, if I have 8 signals, 8 different amplitudes, I can represent 3 bits. R will be 3 then. And if I have 16 different signals and amplitudes, then then R will be 4. So I'll be representing 4 bits per signal. So this is not implementing with pure ASK. जब हमें बहुत सारे bits per signal भेजने होता है, different signal levels होते हैं हमारे पास.
So we are not directly implementing it as suppose 16 amplitudes. We are not having 16 different amplitudes. We implement it as a QAM, quadrature amplitude modulation, where we modulate or we change the amplitude as well as the frequency or the phase. So that we already discussed in the last class that there is the best strategy for doing modulation or conversion from digital to analog is QAM. So we'll be discussing it shortly in today's class. So next type of shift keying or modulation technique or conversion technique from digital to analog signaling is frequency shift keying. So now my carrier signal is basically again an analog signal, which is a sine wave, but my analog signal will be changed and it will represent different types of information, digital information which it will be carrying. So now suppose see figure 5.6. In this, what I am doing is I am having two frequencies, F1 and F2 frequencies, and if I am sending the signal, analog signal or the sine wave at F1 frequency, that will be treated as bit 1, which is shown in figure 5.6. And if I am changing the frequency, then if I am lowering F2 frequency, another frequency, and if it will be received by the receiver, then it will be treated as 0. So my sender is sending two different signals with different frequencies, F1 and F2, and they will be interpreted as ones and zeros at the receiving end. Now these are only two frequencies I am sending. So because I am using only the frequency characteristics of the analog signal, that is sine wave, to represent two different types of basically information. So if I am sending a signal at F1 frequency, that will be interpreted as 1. And if I will be sending another signal with F2 frequency, then it will be represented, it will be interpreted as 0, as shown in the figure here. Now you can see it has shown us 1 second cycle duration, and the bit rate is 5 because I am sending in 1 second 5 bits, and bit rate is equal to baud rate here because baud rate is what? Baud rate is the number of signal changes per unit of time or per second. So I have changed 5 different signals within 1 second. So baud rate is equal to also 5, and I am sending 5 bits of information in 1 second. So it has 5 different sine waves, 5 different signals in this 1 second, and I am sending 10110. So bit rate and baud rate here is equal. So that is equal to 5. Now what is binary FSK? This is same here, because only I am using two frequencies to represent two different types of information, 1 and 0. So, but you can say in this is an unrealistic example because we say normally जो frequencies होती हैं हमारी बहुत higher होती हैं और उनके बीच में difference जो होता है बहुत कम होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमने कहा ना कि F1 और F2, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो F1 और F2 के बीच में जो स्पेक्ट्रम के बीच में आपने देखा है डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा दिखा रखा है, 2df दिखा रखा है, सॉरी 2df नहीं, सॉरी ये इंटर फ्रीक्वेंसी जो वो है, जैसे ब्लू वाला जो आपका यहाँ पर वो रीजन है, दो ब्लू रीजन, उसके बीच में डिफरेंस है. बट नॉर्मली हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो है वो बहुत कम डिफरेंस होता है. सो एज शोन इन द फिगर 5.6, the middle of one bandwidth is F1 and the middle of the other one is F2. So middle of the bandwidth, the entire bandwidth is S into 1 plus D plus 2 of DF. 2 of DF is the differences with interdomain difference. You can see here interdomain difference क्या है हमारा, जो एक डोमेन है फ्रीक्वेंसी डोमेन जो F1 के अराउंड है, ब्लू फर्स्ट ब्लू रीजन और सेकंड ब्लू रीजन के बीच में जो व्हाइट पोर्शन है दैट इज इंटरडोमेन फ्रीक्वेंसी रीजन. So both F1 and F2 are delta F apart from the midpoint between the two bands, and the difference between the two frequencies is 2 of delta F. So basically this is the spectrum for binary FSK if we are using only two frequencies to represent ones and zeros. Now how to compute the bandwidth here? As shown in the figure above, you can see again, the carrier frequency signals are only simple sine waves, but the modulation creates a non-periodic composite signal with continuous frequencies. अब जो हमारा वो आएगा, जो carrier frequencies हैं वो दो simple sine waves हैं, लेकिन जब हमारा वो बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, उसमें हमारे पास एक composite signal आएगा जिसमें कि continuous
frequencies होंगी. So we can think of FSK as 2 ASK signals. हमें आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो वो आ रहे हैं सिग्नल्स आ रहे हैं वो 2 ASK सिग्नल्स आ रहे हैं, 2 एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, ईच विद इट्स ओन कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 और F2. So now you can see in figure 5.6 here. वन इज वन, एक एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के साथ एक सिग्नल आ रहा है और 0 दूसरा सिग्नल आ रहा है, और दोनों ASKs का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डिफरेंट है. फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी F1 है, सेकंड की 0 की करस्पॉन्डिंग जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 है. सो देयर आर 2 frequencies and 2 ASK signals. So we can represent it like this. So if the difference between the 2 frequencies is 2 of delta F, then the required bandwidth is 1 plus D into S, which was the normal one. Now you can see this is the actual formula for bandwidth 1 plus D into S, but we also need some more frequency or some gap between the frequency spectrum so that the signal should not interfere and we should have clear cut demarcation. So 2 of delta of psi, or so this is basically the difference between these two regions here. Now next is okay. So what should be the minimum value of 2 of delta F? In figure 5.6 you can see we have chosen a value greater than 1 plus D into S. It can be shown that the minimum value should be at least S for the proper operation of modulation and demodulation. So the inter-frequency domain region should be at least S, that is the space between the two spectrums. So now example 5.5. We have an available bandwidth of 100 kilohertz as given previously also. It spans over 200 and 300 kilohertz. What should be the carrier frequency in the bitrate if we modulated our data by using FSK with D equal to 1? Now we have to compute for FSK. Earlier with the same values we computed it for ASK. We computed the carrier frequency, we computed the bitrate, but that was for ASK, binary ASK with D equal to 1. And R equal to 1 earlier. Now we have to compute it for FSK. So problem is similar to the previous example, but now we are modulating not using ASK but by FSK. So midpoint of the band is 250 kilohertz and we choose 2 of delta F to be 50 kilohertz. हमने कहा कि जो ये 2 of delta F है बीच में, इसके बीच का जो स्पेस है दोनों स्पेक्ट्रम्स के बीच का वो 50 किलोहर्ट्ज है. So now 1 plus D into S plus 2 of delta is equal to 100. Why 100? Because we are given that the bandwidth is 100 kilohertz. So B is equal to 100 kilohertz. So this entire formula for B should be equal to 100, which is equivalent to 2 of S because B is given to us as 1. So this is 2 of S plus 2 delta is equal to 100, or 2S is equal to 50 kilohertz. Why does 250 kilohertz? Because 2 delta F is given, we choose that it is equal to S or it is equal to 50 kilohertz. So 2S will be 50 kilohertz. So S will be 25 kilobaud because F is basically the signal rate, number of signal changes per unit of time or per second. So K is always represented as baud. And my frequency was in kilohertz. So therefore S will be 25 kilobaud. Now if S is given as 25 kilobaud and we say S is equal to N, then N will be 25 kilobits per second. That is the data rate or the bit rate will be 25 kilobits per second. So compared to the previous example, we can see that the bit rate for ASK was 50 kbps while the bit rate for FSK is 25 kilobits per second. So while you were using the frequency shift scheme, the bit rate has reduced to half. But when we were using ASK, the bit rate was the double, that is 50 kilobits per second. So now there are 2 implementations of binary FSK. One is non-coherent, another is coherent. In non-coherent binary phase shift, frequency shift scheme, there may be discontinuity in the phase when one signal element ends and the next begins. That means when, now see here, now you can see here that it is kind of continuous sine wave. Can you see here in this figure 5.6? When 1 bit was represented by F1 frequency sine wave, it was ending here in 1 bit here. But when 0 bit
sine wave was starting with the different frequency, it was kind of continuous. So after immediately finishing the negative cycle of 1, the positive cycle of 0 was starting. Similarly, when the negative cycle of 0 was ending, the 1 bit was starting with the positive cycle, and so on. So kind of it was a continuous signal, analog signal, and there was no phase change. The phase was almost same. तो जिस फेज में पॉजिटिव या नेगेटिव फेज में आपकी साइन वेव चल रही थी, उसी फेज में उसने नेक्स्ट सिग्नल को कंटिन्यू किया था. सो दिस वाज कंटिन्यूअस, बट समटाइम्स इट इज नॉट कंटिन्यूअस. So when one signal element ends and the next begins, there is discontinuity. So in coherent BFSK, the phase continues to the boundary of two signal elements. So non-coherent BFSK can be implemented by treating BFSK as two SQ modulations and using two carrier frequencies. And coherent BFSK can be implemented by using one voltage controlled oscillator that changes its frequency according to the input voltage. Now figure 5.7 shows the simplified idea behind the second implementation. Now you can see here. Now this is coherent one, as we were discussing. When one signal, because only we are changing the frequency. So that is the number of signal changes per unit of time. So here it is, the one is represented with high frequency signal, and 0 is represented with low frequency signal. Now you can see when one was transmitted, this sine wave took 4 cycles. 1, 2, 3, 4. It's completed 4 cycles. That means a kind of frequency is 4. But when 0 was to be transmitted, the frequency was, the sine wave could only complete 2 cycles, complete cycles. So it was f is equal to 2. So here the frequency was high for 1. This was f1 frequency, and frequency for 0 was 2 only. F is equal to 2. This is low frequency. But where 1 bit has completed the cycle, one sine wave of one cycle of sine wave, 0 has picked up the oscillation, or the continuation is done from the same point. So it has entered its negative cycle when the 1 bit was finished, and when 0 was starting, it will take from the positive sine wave, from the positive cycle of the sine wave. Is it clear to all of you? Figure 5.7. This is kind of coherent BSK, coherent BFSK, because where my first bit was ending, or where the first cycle of my frequency was ending, the analog signal was ending, there only the next bit and the next signal would pick up in the same phase. So there is no phase change, there is no angle change, and there is no discontinuity in the signal. There is continuity in the signal. Only the difference is when one bit was represented, the sine wave could complete more number of cycles because it had higher frequency, and with another frequency f2, 0 was represented, and only the number of cycles of the sine wave that would be completed in one unit of time, that would be different in case of 0. So that the only difference is the number of cycles, that is the frequency. So now we can see here, for the proper operation of the modulator and demodulator, we can see the bandwidth. Bandwidth is B is equal to 1 plus D into S plus L minus 1, 2 of delta. Why L minus 1? Because now I'll be doing multi-level frequency shift keying. अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो आपका frequency shift keying थी वो 2 frequencies पर operate कर रही थी, F1 and F2. Suppose now I have 4 or more frequencies. So F1, F2, F3, F4. So suppose I have 4 frequencies, F1, F2, F3, F4. And so first frequency will be representing 20, 00. F2 may be representing 0 and 1. F3 may be representing 10 bit, and F4 may be representing 11. So I have 4 different frequencies to represent 2 bits at a time. To send 3 bits, I will be needing 8 frequencies. And for sending 4 bits, I will be using 16 different frequencies for different signals. So for every frequency level which I will be using which I use to represent different signals, each frequency should be 2 delta F apart.
Is that fine? So if I have L number of frequencies, L number of signals types, then for suppose I have L level, so L minus 1 will be the inter-domain frequency or the difference between the various frequencies. तो F1 और F2 के बीच में भी कुछ गैप होगा फ्रीक्वेंसी में, F2 और F3 के बीच में भी फ्रीक्वेंसी में कोई गैप होगा, थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रम छोड़ना पड़ेगा. F3 और F4 फ्रीक्वेंसी के बीच में भी आपको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में गैप छोड़ना पड़ेगा. So that will be 2 delta F. And if there are L frequencies, so L minus 1 inter frequency difference होगा और या inter frequency gap होगा. So that gap will be L number of gaps will be L minus 1 and every gap will be of 2 delta F frequency or 2 delta F width. So now my total bandwidth will be changed, and for every new frequency added, frequency level added, you will have L minus 1 2 delta F. You will have 2 delta F of more bandwidth required for the complete signal spectrum. So now suppose this entire thing will come out to be B is equal to L into S. Now, if we are using more frequencies, multi-level frequencies shifting, there will be needing more bandwidth than other techniques. So, you will be अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइज है, तो अगर नॉइज हमारा बहुत सीरियस हुआ तभी हमें यूज करना पड़ेगा. अदरवाइज FSK और मल्टी-लेवल FSK will use more bandwidth. So, just sending more bits per second or to increase the data rate, we'll be using so many things, modulator, demodulator, and decoder also, and you will be needing so many hardware devices to generate those different types of frequency levels, and you'll be needing more bandwidth for different frequencies and different signals to be sent in MFSK. Now, another example for FSK. Now, suppose there as shown multi-level FSK, we have to compute the bandwidth. So you can see figure 5.8, there are 8 frequencies, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 and 8, F8. तो हमारा पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो हमने बताया कि 8 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है, और L हमारा, बिकॉज वी हैव टू सेंड 3 बिट्स पर फ्रीक्वेंसी सिग्नल और पर सिग्नल change, so L is equal to 2 raised to power 3, that is equal to 8. So we can represent 3 bits using one frequency, that is F1 frequency. So the baud rate is S is equal to 3 megahertz. Oh, sorry. So I need to send 3 bits at a time at a bit rate of 3 Mbps. So my bit rate is 3 Mbps and the carrier frequency is 10 megahertz. Calculate the number of levels, different frequencies, the baud rate and the bandwidth. Now L, because I need to send 3 bits, so L will be 8, 2 is for 3. So I need to have 8 carrier frequencies. And the baud rate is S is equal to 3 megahertz by 3 equal to 1. Because why does this? Why S is equal to 3 megahertz by 3? Ma'am, N by R. N by R. What is N here? Ma'am, bit rate 3 megabit per second. Yes. So because bit rate is 3 megabits per second, so my baud rate or S will be equal to N by R, and R we have already computed, that is 3. Fine. So 3 megahertz by 3 is equal to 1, that is 1 megabaud. So the bit rate, baud rate will be 1 megabaud. This means that the carrier frequencies must be of 1 megahertz apart. तो इतना आपका डिफरेंस होना चाहिए, 1 मेगाहर्ट्ज अपार्ट होनी चाहिए, और 2 delta F should be 1 megahertz. So the bandwidth is B is equal to 8 into 1, that is 8 megahertz. So we require 8 megahertz of bandwidth. So now this figure can show you the 8 megahertz का bandwidth पूरा हमें बता दिया कि कितना है. This is showing 8 megahertz पूरा, और सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी,
वो हमारी मिडिल में आपकी अलाइन होंगी। तो सपोज माय स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 6 मेगाहर्ट्ज टू दिस 14 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि पूरा स्पेक्ट्रम हमारा क्या होगा, पूरा स्पेक्ट्रम हमारा 14 मेगाहर्ट्ज का होगा, पूरा सारा का सारा 6 मेगाहर्ट्ज से 14 megahertz. Why I am saying 6 and 14? Because in this example F1 is placed in between 6 to 7. तो हर फ्रीक्वेंसी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 मेगाहर्ट्ज का पूरा उसका वो है 1 मेगाहर्ट्ज का, तो पूरा, और जैसे 1 मेगाहर्ट्ज का इसका रेंज पूरा हुआ वैसे F2, so there is no इंटर फ्रीक्वेंसी और इंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी गैप, कोई गैप नहीं है बीच में यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पर F1 जो फ्रीक्वेंसी है मेरी, और FC इन्होंने बताया है कि वो कैरियर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज की कंप्लीट है हमारी, 10 मेगाहर्ट्ज की है यहाँ पर, तो इट इज इन द मिडिल, राइट। सो मिडिल में आपकी पूरी मेन कैरियर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन मेरे को पूरी बैंडविड्थ के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा 8 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ पूरा चाहिए, और मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी अलाइंड कितना पर है, 10 मेगाहर्ट्ज पर अलाइंड है। तो टोटल स्पेक्ट्रम क्या होगा, 4 बिलो दिस कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड 4 above this carrier frequency. So this will be 6 megahertz to 10 megahertz, 4 frequencies इस डोमेन में आएंगी या इस रेंज में आएंगी, और 10 megahertz से 14 megahertz में नेक्स्ट 4 फ्रीक्वेंसीज आएंगी। और हर फ्रीक्वेंसी का हमने कहा, बिकॉज कैरियर फ्रीक्वेंसी जो हमारी फर्स्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी है, जो एक सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी है, वो भी आपके मिडिल में अलाइन है बैंडविड्थ के या स्पेक्ट्रम के, तो वो 10 मेगाहर्ट्ज है। लेकिन हमें 8 सिग्नल लेवल्स चाहिए और हमारे पास 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए, तो हमारा 6 to 10 में 4 आ जाएंगे और 10 to 14 में 4 आ जाएंगे, और हर फ्रीक्वेंसी जो है 1 मेगाहर्ट्ज अपार्ट है। तो 6 to 7 एक डोमेन हो गया, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, फिर है 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13 एंड 13 to 14। और हर फ्रीक्वेंसी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो इनकी जो सिग्नल्स आएंगे वो भी आपके उस पूरे 1 मेगाहर्ट्ज डोमेन के मिडिल में अलाइन होगा। तो 6 to 7 के मिडिल में क्या आएगा, 6.5, 7 to 8 के मिडिल में आएगा 7.5, सिमिलरली 8.5, 9.5, 10.5। तो जितनी भी हमारी 8 फ्रीक्वेंसीज हैं F1 से F8, उनका जो हमारा इंडिविजुअल जो सब कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना होगा, वो 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5 एंड 13.5 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज फॉर मल्टी लेवल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। सो व्हाट आई एम गिवन इज, मेरा एक पूरा स्पेक्ट्रम मुझे दिया हुआ है जो कि हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी बताया हुआ कि 10 मेगाहर्ट्ज की कैरियर फ्रीक्वेंसी का हमारा डोमेन हमें बताया है। अब उसकी बैंडविड्थ हमें कैसे निकालनी है, बिकॉज ऑलवेज माय बैंडविड्थ इज इन द मिडिल ऑफ द डोमेन, पूरे स्पेक्ट्रम के मिडिल में होती है। तो अगर हमें 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बताई है और हमें बताया है कि हमें 3 बिट सेंड करने हैं, तो हम उसका पूरा स्पेक्ट्रम कैसे निकालेंगे, 6 to 14 कैसे हमने निकाला, बिकॉज वी सेट L = 8 होगा, 3 बिट्स भेजने हैं तो 8 सिग्नल्स हमें भेजने होंगे। फिर हमने उससे बिट रेट से हमने बॉड रेट निकाला 1 मेगा बॉड, और उसमें हमने हर एक की कैरियर फ्रीक्वेंसी निकाली। So all the carrier frequencies should be 1 megahertz apart, and bandwidth फिर हमने निकाली 8 megahertz। तो अगर सेंटर में अलाइन है हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो और 8 megahertz का हमें पूरा स्पेक्ट्रम चाहिए और पूरी बैंडविड्थ चाहिए, तो हमें 4 लोअर साइड पे और 4 हायर साइड पे चाहिए, और हर एक को 1 मेगाहर्ट्ज का हमने पूरा डोमेन दे दिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन, और उसके मिडिल में हमारी सारी कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं जो इंडिविजुअल कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि यूज होंगी सिग्नलिंग के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is this example clear? Example 5.6. How we computed 8 frequencies and okay. So next, the third type of digital to analog conversion technique is phase shifting. Phase shift is basically when currently my analog signal or my sine wave is going from, suppose, low to high या positive to negative, and then it has to go in the next cycle, it has to go negative to positive, and suddenly we just change the phase. And now suppose in this figure 5.9 you can see the blue part which is sending the 1. I am sending 1 bit here, and it was the normal analog signal, normal sine wave. So it completes the third cycle, 1 second,
third. So 3 cycles it has completed, and the cycle was completed on the negative side. नेगेटिव से जीरो की तरफ, ओरिजिन की तरफ जा रहा था. जैसे ही आपका जीरो स्टार्ट करना था, तो मैं नॉर्मली अगर मुझे 1 भेजना था तो मैंने फेज मेरा यही रहता, और आई वुड हैव started my sine wave from a positive to negative, positive to negative, positive to negative. But now I need to change the phase, so it instead of going up, it is going down. Can you see here in figure 5.9? Figure 5.9, students, can you see here? The black one, which is representing the zero wave, for the analog signal for zero. So here, at the start of the zero bit, it should go normally. अगर मेरे को सिर्फ एनालॉग सिग्नल भेजना था या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भेजती, मैं अगर ASK भेजती, तो मेरा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है फर्स्ट साइकिल जीरो की. लेकिन अब ये ब्लैक वाले में मेरा जो साइन वेव है, इट इज अगेन हैविंग अ फेज चेंज. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग from 0 to positive side and then negative, it is going from 0 to negative and then positive. So it is changing it is reversing the phase. It is changing the phase. So that is binary PSK, PSK, phase shifting. And binary PSK phase, you for zeros, you are always changing the phase, and for ones, you are not changing the phase. This is binary PSK. Phase change of the normal wave, एक normal sine wave जा रही है. जब भी मुझे 1 बिट रिप्रेजेंट करना है तो फेज सेम रहेगा 1 1 1 1. तो हर उसमें हर ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में मेरा 1 जाएगा. लेकिन जैसे ही मैंने अपना जीरो भेजना है तो आई विल चेंज द फेज. तो जो नॉर्मली चल रहा है, जीरो पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा है, जो भी फेज चल रहा है अभी, उसका मैं चेंज कर दूँ. तो 1 फेज विल बी फॉर जीरो, 1 फेज विल बी फॉर 1. So 1 will always start with a positive sine wave, 0 will always with a negative cycle of the sine wave. This is phase shifting, binary phase shifting. So in phase shifting, the phase of the carrier is varied to represent 2 or more different signal elements. Both peak amplitude and frequency remain constant as the phase changes. Now you can see the frequency of the analog signal in figure 5.9 is same. So the number of cycles or the number of repeated cycles of the sine wave per bit is same. It is 3 cycles. So either it is completing 3 cycles, negative cycles, or 3 positive cycles, starting with any phase. Every bit will be represented by 3 cycles of the sine wave. Fine. So my frequency will remain same. So number of cycles of the sine wave is P, constant. And amplitude also, you can see the black sine wave and blue sine wave. All the positive, maximum positive amplitude and maximum negative amplitude is same. So amplitude and frequency will remain same, but the phase is changing. One cycle is represented with a positive to negative change, another one is negative to positive. So 0 is negative to positive cycle first, and for 1 it is positive to negative cycle in the starting. So we'll see that ASK and PSK can be combined to get QAM, that is quadrature amplitude modulation. That is the best technique. Now here also you can see for binary PSK, the right-hand box, right-hand rectangle in 5.1, figure 5.9, you can see the bandwidth here is also 1 plus D into S, and the carrier frequency is also located in the middle, that is FC. And S0 N and R equal to 1 for binary phase shifting. So here there is no bandwidth which is wasted for separating 2 carrier signals. So and bandwidth is same as which was used for ASK, that is amplitude shifting की और phase shifting की जो bandwidth requirement है, that will remain same. Only जो FSK है, frequency shifting है, उसकी जो bandwidth है, requirement है, वो ज्यादा हो जाती है, because we'll be needing so many carrier signals, so we'll be needing so many frequencies, and inter-domain frequency we'll be needing some space for inter-domain range also. Inter-domain gap को भी fill करने के लिए we'll be wasting some frequencies, so we'll be needing a higher and spectrum and more bandwidth. But for ASK and PSK, the bandwidth requirement will remain same. So implementation for DPSK is
The reason that the signal element with phase 180 degree can be seen as a complement of the signal element with phase 0 degree. So what you are doing is you're just changing the phase and you're taking the complement of the signal element. So this gives us a clue on how to implement binary phase shifting. We can use the same idea we use for ASK with polar NRZ signal instead of unipolar NRZ signal. So in case of ASK, we use unipolar NRZ signal, but now we'll be using polar NRZ signal for PSK, binary PSK. So you can see in figure 5.10, polar NRZ signal is multiplied by the carrier frequency. So the one bit, that is the positive voltage, is represented by a phase starting at 0 degrees, and the 0 bit, that is the negative voltage, is represented by a phase starting at 180 degrees. So now you can see 0 is starting at 180 degrees from the down and going up. That is negative cycle is completed first, and for 1, positive cycle is completed first. So this is known as normal BPSK. So you are having two phases, 0 degree for 0 bit or 1 bit, and 180 degree phase change for 0 bit. Then we have quadrature PSK. The simplicity of BPSK entices designers to use 2 bits at a time in each signal element, thereby decreasing the baud rate and eventually the required bandwidth. The scheme is known as quadrature PSK or QPSK. Now what we can do is, instead of sending only 1 bit, which is represented by 1 phase change, what we can do is we can represent 2 bits with every phase change. Okay, so we can use quadrature PSK. So there are two things, two separate BSK modulations. One is in phase quadrature, and another is quadrature, which is known as out of phase. So incoming bits are first passed through a serial to parallel conversion that sends 1 bit to one modulator and the next bit to another modulator. So we'll be seeing that it is now you can say 2 to 1 converter. So here you can see, if the duration of each bit in the incoming signal is T, the duration of each bit sent to the corresponding BPSK is 2T. So this means that bit to each BPSK signal has 1/2 of the frequency of the original signal. Now it represents this idea. You can see when we were earlier sending 0, 1, 0, 1, this was my data which was to be sent earlier, 0, 1, 0, 1. So this was normal signal, and this is zero. Now you can see here, पहले वाला जो हमारा नॉर्मल साइन वेव चल रही थी वो ब्लैक वाली थी, दिस वन. व्हाट वी डिड वाज कि हमने यहाँ पर फेज चेंज कर दिया. ये वाला एक सिग्नल नॉर्मल जा रहा था हमारा, और उसमें हमने ये नीचे जो मिडिल वाला लाइन है यहाँ पर देखो, हमने चेंज किया कि हमने यहाँ पर फेज चेंज कर दिया. इंस्टेड ऑफ दिस वन हमने ये वाला फेज चेंज कर दिया और यहाँ पर दो सिग्नल्स को हमने मर्ज कर दिया. तो अब नाउ हम देखो, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है और हमारा एम्पलीट्यूड भी सेम है, बट हमने क्या किया, हमारे पास 4 फेजेस आ गए, -135 डिग्रीज, -45 डिग्रीज, 135 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज. हाउ -135. तो अगर मेरा फर्स्ट सिग्नल जो जा रहा है -135, देखो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है यहाँ पर, और स्टार्टिंग में भी पूरा 0 ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरी नेगेटिव साइकिल भी -135 फेज से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर. इस केस में मेरी जो साइकिल शुरू हो रही है ब्लू साइकिल, वो -135 डिग्रीज पर मेरा एंगल बन रहा है, और मेरी साइन वेव 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है. नेगेटिव साइकिल भी मेरी -135 फेज से स्टार्ट हो रही है, तो डिफरेंट पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है. दिस इज -135 फेज,
और मेरी जो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रही है, मेरा दूसरा सिग्नल क्या है, उसमें मेरा -45 पर मेरा नेगेटिव सिग्नल शुरू हो रहा है. So that is known as -45. So this is a different phase. Still the frequency is 3. You can see for -135 there are 3 cycles which are completed. For -45 also 3 cycles have been completed. और जिस फेज में मैंने यहाँ पर छोड़ा था वहां पर अगर मैं उस फेज के बाद 135 एंगल पे देखो, 135 इज पॉजिटिव प्लस 135. सो प्लस 135 के केस में जो मेरा सिग्नल जा रहा है उसका फेज मेरा पॉजिटिव साइड पे शुरू हो रहा है और वो एंगल भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही मेरी साइन वेव, मेरा प्लस 135 डिग्री से स्टार्ट हो रही है. और मेरी जो लास्ट वाली साइन वेव है वो पॉजिटिव साइकिल से तो स्टार्ट हो रही है लेकिन पूरी 0 से नहीं स्टार्ट हो रही है, वो 0 ओरिजिन नहीं है, उसका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ओरिजिन के साथ. सो दैट मेक्स अ डिफरेंस. सो देयर आर 4 different signals. This is making -135 degrees angle with the origin. It is making -45 degrees angle. It is making 135 degrees. It is 45 degrees. So there are 4 different types of the same sine wave is being sent. The carrier frequency is same, that is fc. Amplitude is same, but my phases are different. So 4 different angles, 4 different phases. So if my receiver receives 4 different types of signals starting at a different point, then it will perceive it as a different signal element. So if my receiver is always having any 4 of these signals, -135 phase change, -45 degree, 135 degree or 45 degree. So always my receiver will be expecting these 4 types of signals, and one of them -135 the protocol will say, physical layer protocol will be common, and both of them, sender and receiver, will have the same interpretation of the bits. So if I am sending my signal as -135, it may be represented as 00. If I am sending it with -45, it will be represented as 10, and 01 is 135 and 11 is 45 degrees angle. So every signal change, every phase change will represent a different combination of bits. So instead of having these 4 phases, if I suppose I say my amplitude for these 4 phases, -135 degree, -45 degree, 135 degree and 45 degree, I am having same amplitude, A amplitude. But if I want to send 3 bits per signal, what I can do is I can have 2 different amplitudes on the same 4 phases, -35, 135, -45, 135 and 45. If I say -135 phase and A1 amplitude, -135 A2 amplitude. So that will be 2 different signals. Similarly, -45 degrees phase and A1 amplitude, signal amplitude, and A2 signal amplitude. Similarly, 135 phase and A1 amplitude and A2 amplitude, and 45 degrees phase and A1 amplitude and A2 amplitude. Now there would be 8 combinations of phases and amplitude. So we'll be having 8 different analog signals and 8 different sine waves with some phase and some amplitude. So what is now we have done? We have increased the bit rate. We have increased the data rate. How? Because now there will be 8 different signals which will be sent by the sender, and that will be interpreted as 8 different signals at the receiver side. And because there are 8 different signals, I can represent 3 bits with 8 different kinds of signal levels. So that is known as quadrature. Quadrature means, quad means 4, amplitude modulation. So at 4 different phases, -135, -45, 135 and 45, that is quad. So quadrature means 4 phases, and quadrature amplitude modulation means at these 4 different quadrature or at 4 different phases, I am changing the amplitude, that is A1 and A2. So just merely changing 4 phases, and at every phase if I am changing the amplitude, only 2 amplitudes, it will give me 8 different combinations of signals, and 8 different combinations of signal levels will be represented as 3 bits per signal. Is it clear to all of you? When level is equal to 4 in the current figure 5.11 example, we can represent 2 bits per signal. That is R equal to 2.
But when I am doing QAM, that is quadrature amplitude modulation, and at these 4 different possible phases, I can send 2 different amplitude per phase, A1 and A2. Then there will be 8 different signal levels, and I'll be able to represent 3 bits per signal change. Hope that is clear to all of you. मैं एक स्टेप आगे ले गई हूँ इससे भी आपको QAM आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया. Quadrature amplitude modulation is quad means 4. Quadrature amplitude modulation is at 4 different phases. I am sending different amplitude levels. So normal QAM is, if I say normal QAM, that will be simple QAM is sending 2 different amplitudes, 4 phases and 2 different amplitudes. But if I just want to increase the data rate of QAM, so that is QAM 8, I am telling you. QAM 16 will be having 3 different amplitudes, A1, A2 and A3 for 4 amplitudes, because after 8 will be 16. So if I am sending 4, I have 4 different phases, minus 135, minus 45, 135 and 45. And at every phase, I have 4 different amplitude levels, A1, A2, A3 and A4. So now there will be 16 different signals, because per phase I have 4 amplitudes. For minus 45 also I have 4 amplitudes. For 135 also I have 4 amplitudes. For 35 also I have 45 also I have 4 amplitudes. So there will be 16 different signal levels. So L equal to 16, and that will give me 4 bits per signal element, that is R is equal to 4. So that way I can increase the number of amplitudes per phase, and the number of signals will change, the level will change, L will change, and R will also change, and the number of bits per unit of time sent will be changed, and that therefore we can increase the data rate using the QAM modification. So QAM 8 is 2 amplitude levels per phase, QAM 16 is 4 amplitude levels per phase, and QAM 2 is 8 amplitudes per phase. Or you can also change the number of phases. So phases change कर दो आप 4 की जगह 6 phases कर दो या 8 phases कर दो, और हर एक पे 2 amplitude कर दो. So there is a combination of amplitude modulation, the number of amplitudes per phase. So now the next example, figure 5.7. Find the bandwidth for a signal transmitting at 12 Mbps for QPSK, that is quadrature PSK, the value of D equal to 0. Now earlier used to have the value of D as 1, now we are saying value of D can be assumed as 0. So for QPSK, find out the bandwidth when the signal is transmitting at 12 Mbps of this bit rate. So 2 bits are carried by 1 signal element. For QPSK, we say if I normally using quadrature PSK and there is not QAM, only QPSK we are using. So what we can say is, as per this figure 5.1, for QPSK normal implementation, we can send 2 bits per signal. So 2 bits per are carried for one signal element. This means that R equal to 2. So the signal rate, that is baud rate, is S equal to N into 1 upon R, which is 12 into 1 upon 2, because R equals 2. So that is 6. And because this was Mbps, 12 Mbps of data rate, we say 6 M baud, because N was 12 Mbps, R equal to, so 12 Mbps into 1 upon 2 is 6 M baud. So 6 mega baud is the signal rate. So with the value of D equal to 0, we have a bandwidth is equal to, bandwidth is 1 plus D into S. Where D equal to 0, so the 1 plus 0 is 1 into S will be S. So bandwidth is equal to S, which is equal to, S is 6 M baud. So the data rate is equal to baud rate, baud rate is equal to bandwidth. So this is because the bandwidth should be in megahertz, so instead of 6 M baud, we'll be having 6 megahertz of bandwidth. So we'll be requiring 6 megahertz bandwidth for transmitting a QPSK signal at 12 Mbps data rate, where the D equal to 0. I hope it is clear. So now what is the constellation diagram? What is the constellation? When we are discussing about stars and Ma'am, group of stars which form a pattern.
Yes, ma'am. So similarly, in case of digital communication, we use we use a pattern dots which represent these dots, or these patterns will represent at what phase and at what amplitude we'll be sending the signal. So constellation diagram, it helps us to define at the amplitude and phase of a signal element, particularly when we are using two carriers, one in phase and one quadrature. So in phase and quadrature हम दो carriers use कर रहे हैं, तब हमें जब ASK और PSK को कंबाइन करना होता है तब हम कॉन्स्टलेशन डायग्राम को हम उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एम्पलीट्यूड होगा और कौन सा फेज होगा. So that will be used in QAM. Now you can see here, अगर हम सिंपल these are three constellation diagrams to represent the amplitude and the phase. Now if I want to represent ASK, that is amplitude shift. तो amplitude shift कीइंग में क्या होगा कि मेरा एम्पलीट्यूड क्या है, सेम फेज में जा रहा है. अगर हम बाइनरी ASK की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ऑन ऑफ कीइंग होती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कीइंग, और मेरे पास दो ही एम्पलीट्यूड्स होते हैं. या तो मेरा सिग्नल एलिमेंट जो है वो 0 होगा, या मेरा एम्पलीट्यूड लेवल जो होगा वो 0 होगा, या एम्पलीट्यूड मेरा 1 होगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा एनालॉग सिग्नल का या साइन वेव का. तो मेरा कॉन्स्टलेशन डायग्राम में देयर विल बी ओनली 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, that is at 0 and at 1, because 1 will be representing my amplitude. So my x-axis is representing my amplitude of the signal. There will be two amplitudes, 0 amplitude and 1 amplitude, two signal levels. Fine. For binary PSK, I told you I can have two phases. Fine. For phase, so this constellation diagram says कि अगर मेरा यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 0 मेरा इस फेज में जा रहा है, तो सेम फेज है हमारा, एक पॉजिटिव फेज में जा रहा है और एक 180 डिग्री अपोजिट फेज में जा रहा है. तो BPSK में भी आपके पास जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम होगा 0 और 1 बिट के लिए, वो कैसे होगा कि 1 बिट मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 फेज में है, लेकिन अपोजिट फेज में सेम एंगल, जो डिफरेंट एंगल होगा वो होगा 0 के लिए. सो दिस इज रिवर्स. तो जिस फेज में मेरी साइन वेव जा रही है वो 1 के लिए, उससे ऑपोजिट फेज में 180 डिग्री फेज में मेरी दूसरी वाली जा रही है. ठीक है. लेकिन अगर हमें QPSK रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग रिप्रेजेंट करनी है, तो उसमें मुझे 4 डिफरेंट एंगल्स रिप्रेजेंट करने हैं. सो यू कैन से 0 0 इज -135 डिग्री एंगल, 0 1 इज दिस minus of this 45, and this plus 45 is 1 1, and minus 135 this plus 135 is नीचे minus 135 is 1 0 and plus 135 is 0 1. So these are the 4 different phases. So this constellation diagram represents my amplitude and phase both. Now these were the 3 simple things which we already discussed: ASK, on-off switching, on-off key, BPSK and QPSK. उसके लिए तीनों डायग्राम्स आपने देख ली कि कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स वो फिगर 5.13 में दिए हैं. लेकिन जब हम QAM को डिस्कस करते हैं तो QAM के बहुत सारे मॉडल्स हैं. 4 QAM, 4 different signal element types which is similar to QPSK, quadrature PSK, or we can have QAM of 4 QAM आपके 2 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, इनफैक्ट 3 तरीके से, और 16 QAM हमारा डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है. Now see QAMs की जो डिफरेंट कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स हैं, आपने कहा कि एक ही QAM जो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसमें फेज सेम है. ठीक है, आप सेम फेज में जा रहा है, लेकिन या आपका QAM जो कोर QAM फर्स्ट वाला डायग्राम है A है, उसमें आपने क्या किया, वो एक ही फेज में, जैसे यहाँ पर देखो नीचे वाली जो 2 डॉट्स हैं, जो एक्स एक्सिस पर 2 डॉट्स हैं, या तो 0 है एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. तो 0 फेज में आपका एक ही एम्पलीट्यूड है. ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला जो है वो आपका 90 डिग्री फेज में भी आपके 2 एम्पलीट्यूड है, 0 एम्पलीट्यूड है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. तो जो टॉप के 2 जीरोज हैं, ऊपर वाले 2 जो डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड पर मेरे 2 फेजेस हैं, और एक ही मतलब 0 फेज और 90 डिग्री फेज में आपका एक एम्पलीट्यूड है, 0 डिग्री और 90 डिग्री फेज में दूसरा एम्पलीट्यूड है. तो 2 एम्पलीट्यूड और 2 फेजेस. इसमें आपका जो बी पार्ट है उसमें क्या दिखा रहा है
एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, चारों तरफ एम्पलीट्यूड मेरा सेम है, लेकिन मेरा 4 फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं। और सी पार्ट में मेरा क्या दिखा रहा है कि आपने फेज भी थोड़ा सा चेंज किया है और एम्पलीट्यूड भी चेंज किया, 4 डिफरेंट सिग्नल्स हैं मेरे। और मतलब वो जीरो ओरिजिन पर नहीं है, मेरा जीरो में नहीं है, उसके चारों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और 2 का एम्पलीट्यूड सेम है, 2 का फेज सेम है। और 16 को हमने क्या किया, हर एंगल पे आपने 4 डॉट्स दे दिए हैं, तो हर एंगल पे 4 एम्पलीट्यूड्स हैं। Every angle has 4 amplitudes. This is 16 QAM. So bandwidth for QAM, minimum bandwidth required for QAM transmission is the same as that required for ASK and PSK transmission. So QAM has the same advantages of PSK over ASK. So जो PSK और ASK के advantages हैं वो ये है कि आपका सिंपल फेज चेंज से आप डिफरेंट बिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो QAM की एडवांटेजेस ये हैं कि आप एक ही फेज में 2 एम्पलीट्यूड्स भी भेज सकते हो, और नहीं तो फेज चेंज करने से ही आपका सिग्नल चेंज भी हो जाएगा। सो दैट विल बी बेटर थिंग, बिकॉज उसमें आपका क्या है कि सिंपल आपको ऑसिलेटर के थ्रू आपको अगर NRZ या यूनिपोलर या बाइपोलर NRZ कर रहे हो आप, तो उस केस में आपको सिंपल ऑसिलेटर के थ्रू पास करना अपने सिग्नल, एंड यू कैन हैव अ डिफरेंट फेज और अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट सिग्नल। So that's easier to implement as compared to so many amplitude variations in the same signal. So what we can do is we can change the phase instead of changing all the amplitudes. And on the same phase, we can have 2 different amplitudes if we want to implement it normally, and we can have QAM also, that is quadrature amplitude modulation. That's all for digital to analog conversion from my side. If you have any doubts, you can ask me right now, because tomorrow we'll be starting with the next chapter, that is chapter 6. Any doubts from this class? Students? Today we will try to read these things by our own, and then we will realize where we are not getting the concepts, Okay. and we can ask you. Fine. So you can go through this chapter 5, digital to analog conversion, and previous chapters also. So because when we'll be doing revision, you will get some difficulties also, some doubts. So before having any test, you can just revise it now. You can just read it, and if you have any doubts, you can ask me then and there only. Because जब भी fresh होता है तो आप easily आप उसको grasp कर पाते हो, मेरे लिए भी easy रहेगा आपके doubts को करना चाहते हैं. So you can ask me in tomorrow's class if you have any doubts. Otherwise, we'll be starting with chapter 6 tomorrow. Or I think we can start today also. We have half an hour left. कौन जगह हुआ है, कितने बच्चे जगे हुए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जगे हुए हैं? Yes, ma'am. सब जगे हुए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Just wait. So I think let's start with the next chapter now, because we have half an hour left. So at least we can have an introduction. Just wait for a moment. Okay, ma'am.
Wait for a moment. I will share my screen. One. Hope I'm not going fast. I hope I'm not going so fast. No. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, So, we need break. Related to this break, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तो पूछा था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूं क्या? नेक्स्ट टॉपिक इन फैक्ट. How much break you need? 5 minutes is okay for all of you. Okay, you can take you can take 5 minutes break. You can go and drink water and come back within 5 minutes. Okay. Okay, ma'am. Basically a shared resource. Moreover, you will be utilizing it efficiently because one day, if you are sharing it with other friends and you make a plan with your friends that today I am going to the same, or you suppose parents are going to the office and everybody is going to the same place. So 4 of the neighbors were going for office to the same place or to one of the places where till that point they can share their cars and vehicles. So at least they are sharing their road. और रिसोर्सेज शेयर करने के बाद क्या होगा वहां पे आपका हर एक का वी कैन हैव टर्न्स आल्सो. Suppose all the 4 neighbors have their car, so one day one neighbor can take the car and all of the neighbors can share their car. Some other day some other neighbor is going. So at
at least on 4 days, you can, if 5 people are there and we have to go to the office from Monday to Friday only, and they are having the nearest destinations also, or their offices are near to each other's office, then they can share the car. Or they are going by, suppose all of them are going by metro, so they can go to the metro on the same time and they can share the car. So that way they are sharing the resources and they're doing multiplexing. So this is one example. Now another example is, suppose you have a Wi-Fi router at your home, and it's not that if you have 4 mobile devices or if you have 4 siblings or 4 people, family members in the house, and all of them have their own routers. No, that's not the case, because that Wi-Fi device has a more data rate, it has more capacity, it has more resource. So that much data rate is not being used by one of the family members. So all of them are sharing it, and they are doing frequency division multiplexing or time division multiplexing, depending on the situation. They are doing multiplexing. So they are using the same resource and utilizing the maximum capacity of the resource which is being offered by that particular resource. So normally what happens when we are, like in this case of Wi-Fi example, we are having a higher data rate. If we say I have a Wi-Fi router at home, and that device has a data rate of 80 Mbps, 80 megabits per second. That much is not utilized by one laptop or one mobile device. So if I'm only one person at home, I'm alone at home, and all of them are away from home, I am not able to utilize the entire bandwidth or entire capacity of that Wi-Fi device, 80 Mbps. But if suppose I have some guests at home, I have my grandparents, I have my parents also, I have my siblings at home also. Suppose 8 people are there in the family, or only 8 people are at home at a particular time, they can share the bandwidth, and maximum person may be watching some video or maybe a YouTube or a normal movie. The maximum capacity they can share is 80 megabits per second, and because 8 of them are there, so 80 Mbps divided 10, so 10 Mbps is the maximum capacity, maximum bandwidth they can use, or maximum data rate they can have on their own individual devices. That will be, it seems that it may be a lower data rate, but when you're watching movie, it doesn't seem to be a low data rate, because you will be busy, or you may be just using WhatsApp or Instagram, you're just messaging. So just for messaging and all these things, you can utilize that. You can do that type of multiplexing. So that data rate won't be too low. It won't seem too low. So normally multiplexing, we are using the entire capacity of the link, the single link between the two source and the destination. And what we can do is we are sharing the channels. So in multiplexing, we use 2 types of devices over the channels and the links. At the sending side, we have n number of devices which needs to be multiplexed, and they will be sharing the same channel. So we need a multiplexer which is known as n×1, which has any input lines and devices connected to it, and the data from those n devices will be sent over the same carrier channel. And only over the one link, and that will be sent to the demultiplexer at the receiving side. The demultiplexer device will further bifurcate, divide the received signal into the individual signal components which were sent by the multiplexer, and it will be given to the N output line. So there will be 2 devices involved in multiplexing. One multiplexer, which is the sending side, which is receiving N inputs and forming a joint or composite output, that is one single output which is sent through this link, and demultiplexer device which receives a single input and it converts it into N output line. This is a device, these are the 2 basic devices which will be using multiplexing. So normally we have in digital communication 3 types of multiplexing techniques. Frequency division multiplex, which is analog type, wavelength division multiplexing, which is again analog type, and time division multiplexing, which is digital. Okay, for digital signals. So now the best example for frequency now
before discussing the example, we discuss what is synthetic multiplexing. Now, suppose when I'm talking to you on phone or on normally to someone, so one audio range, as we discussed earlier also, the human audible range is 4 kilohertz, or maybe if you go to an extreme, if you have a very fine sensitive receiver or sensor, then an audio at 300 hertz also can be heard. Okay, and the maximum capacity of human ear is 4,000 kilohertz, or maximum audible range is 4,000 kilohertz. So normally we say 4K hertz is an audio range. तो सपोज मुझे अपने चार जैसे आप उस पर भी करते हैं, मैंने कल परसों भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारे जो FM चैनल्स हैं, आपने उन सबकी रेंज क्या सुनी है मेगाहर्ट्ज में? 98.3 मेगाहर्ट्ज, 95 रेड FM इज 95 मेगाहर्ट्ज, और रेडियो सिटी इज 91 मेगाहर्ट्ज. So all of them are in megahertz range. How? Because as we had seen in this earlier chapter also, fifth chapter, when we were converting from digital to analog, we had those higher carrier frequencies. तो जो मेरी carrier frequency है जिसके थ्रू मैं डेटा को ट्रांसमिट कर रही हूँ, वो मेरा हायर फ्रीक्वेंसी रेंज का है और वो ऑडियो रेंज के बाहर है. तो अब सपोज मुझे बहुत सारे रेड एफएम और रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, जितने भी चैनल्स हैं, FM चैनल्स हैं, उनको मुझे टेलीकास्ट करना है या ब्रॉडकास्ट करना है उन पर कोई भी, तो उनका जो डेटा मेरे पास आ रहा है, जो मैं FM से सुन रही हूँ, वो क्या है? मेरा म्यूजिक है या मेरा कुछ ऑडियो है? कुछ भी ऑडियो है. सपोज मेरा कोई रेडियो जॉकी है जो बोल रहा है, रेडियो पे जो क्या न्यूज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, दैट ऑल इज इन द रेडियो रेंज. So that is 4 kilohertz range. Maximum 300 hertz or 400 hertz to 4 kilohertz. That is the audio range. इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सकती. लेकिन मेरी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है? मेरा जो चैनल है जिसके थ्रू ब्रॉडकास्ट होकर जो रेडियो वेव्स मेरी आ रही है वो मेगाहर्ट्ज रेंज में. तो मेरा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज है, which is out of or which is not my normal range on which I am transmitting the data. But my data transmission, which is my analog signal, is in the range of 4 kilohertz. That is audible human range. तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे सारे जितने भी रेडियो एफएम चैनल्स हैं या हमारे जो सारे रेडियो एफएम के चैनल्स हैं, उनका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो मेरा ऑडियो रेंज में ही हो रहा है 4 किलोहर्ट्ज. लेकिन जो चैनल की कैपेसिटी है वो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में है और वो ज्यादा है. तो आप जो जितने भी रेडियो चैनल्स हैं, दे आर शेयरिंग वन पर्टिकुलर रेंज. सपोज 90 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज, दैट इज माय एंटायर चैनल. तो वो मेरा रेडियो चैनल जो है वो फ्री है. वो फ्रीक्वेंसी चैनल मेरा हायर फ्रीक्वेंसी चैनल वो फ्री है. ना तो उस पर कुछ और रेडियो वेव ट्रांसमिट हो रही है, ना टेलीविजन ट्रांसमिशन हो रहा है, ना कोई और ट्रांसमिशन हो रहा है. तो 90 to 100 वाला जो मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो मैंने किस लिए यूज किया? रेडियो वेव के लिए और रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, एफएम ट्रांसमिशन के लिए मैंने यूज किया. Why we say FM? Because that is frequency modulated. Because my signals on FM radio channels are modulated using frequency modulation techniques. That's why we call them as FM radio or FM channels. Now, what the reason why we call them FM radio channels? Because they've been modulating, will be changing my audio signals, which needs to be transmitted over radio or through radio, which to be received or sent through radio signals. Then those are known as FM channels, because I'm changing my audio range, human audio range, to a different frequency, carrier frequency, and I'm doing frequency modulation there. So I'm changing. So what I'm doing is, मेरा actual signal का जो range है, जो frequency range है, suppose वो है 95 मेगाहर्ट्ज और 98.3 मेगाहर्ट्ज है. तो मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी तो 98.3 मेगाहर्ट्ज की है, लेकिन मेरा जो ऑडियो सिग्नल जा रहा है वो 4 किलोहर्ट्ज का जा रहा है. तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैं मॉड्यूलेट कर रही हूँ. तो जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी स्पीच है वो मॉड्यूलेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो 98.3 मेगाहर्ट्ज का जो वो है कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो भी साथ साथ मॉड्यूलेट हो रही है. तो मेरे एनालॉग सिग्नल के ऊपर से सुपर इम्पोज होके मेरा दूसरा ऑडियो जो एनालॉग सिग्नल है वो जा रहा है. सुपर इम्पोज बोलते हैं इसको, हम मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं. So we are not going into the details how it is being done, but I'll just give you a glimpse of FDM. So what we are doing here in figure 6.3, we have various channels. Suppose channel 1 is suppose Radio City और Red FM और बहुत सारे channels हैं आपके, और Radio Mirchi and all those.
7-8 channels or 9 channels, I hope, FM channels. So what we are doing is, इनपुट हमारा क्या मल्टीप्लेक्सर था, मेरी ऑडियो रेंज है जो हर चैनल पर ट्रांसमिट होना है, जो हर रेडियो चैनल पे, एफएम चैनल पे ट्रांसमिट होना है। और आउटपुट क्या है, एक सिंगल चैनल है हाई बैंडविड्थ का, उसमें भी जो इंडिविजुअल चैनल है, चैनल 1 रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, बिग एफएम एंड ऑल दोस चैनल्स, these are the individual channels and the data, entire data is clubbed and it is sent over the in the air. हम क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करके भेज रहे हैं। अब मेरा जो रिसीवर है, अब अगर सपोज मेरा मोबाइल डिवाइस पर मैं रेडियो सुन रही हूँ या मैं सिंपल रेडियो डिवाइस पर रेडियो सुन रही हूँ, कहीं पर भी मैं एफएम चैनल्स को कर रही हूँ, तो मेरा जो ट्यूनिंग है, मेरे रिसीवर जो है, अगर वो 98.3 मेगाहर्ट्ज को रिसीव करने के लिए ट्यून्ड है, तो उसमें एक डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है और वहां पर मैं ट्यूनिंग कर दूंगी। तो जब मैं कहती हूँ कि सेट कर रही हूँ मैं अपने रेडियो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी, तो वो डीमल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा है और उसपे सिर्फ वो फिल्टर कर रहा है, वहां पे फिल्टरिंग कर रहा है कि वो सिर्फ 98.3 वाला जो फिल्टर है उस वाली फ्रीक्वेंसीज को, उस मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करेगा, जो कि हवा में अभी मेरे पास रेडियो वेव्स की फॉर्म में जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। एंड दैट मीन्स आई विल बी यूजिंग द रेडियो मिर्ची एंड आई विल बी एबल टू रिसीव रेडियो मिर्ची। एंड एट एंड पॉइंट आई विल बी हैविंग अ converter which is converting, receiving the frequency at 98.3 megahertz, and then I'll be using a device which will be again converting it back to the human audible range, that is 4 kilohertz, and I'll be able to hear that on my speaker in my device. So if the speaker का जो मेरे फोन का डिवाइस है जो कि ट्यून है 98.3 मेगाहर्ट्ज में, क्या लगा हुआ वहां पर मेरे पास लगा हुआ है कि जो उसको उसमें से फिल्टर करेगा, उस रिसीव फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ 98.3 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को निकालेगा और उस पे भी उसको, क्योंकि वो मेगाहर्ट्ज में है, उस फ्रीक्वेंसी को फिर कन्वर्ट करेगा और फिर मुझे वो एनालॉग सिग्नल, जो मेरा ऑडियो सिग्नल जो मुझे रिसीव करना है, जो मुझे शेयर करना है, गाना सुनना है या जो भी उसमें स्पीच आ रही है, जो भी उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, उसके जो ऑडियो रेंज में आ रहे हैं, तो मैं आई कैन हियर दैट। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो इनपुट है उसको हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम एक सुपर इम्पोज कर देते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी रेंज करियर पे सुपर इम्पोज करके भेज देते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल सिग्नल को जो आ रहा है, सिग्नल चैनल्स जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, उन सिग्नल्स को अलग अलग डिवाइड कर देता है, सेपरेट करता है और फिर उसको फर्दर एट द रिसीविंग एंड जो है उसको कन्वर्ट बैक कर देता है इन द नॉर्मल रेंज। लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में हम वी आर एबल टू receive those signals at the receiver side. This is frequency division multiplexing. So FDM is basically analog multiplexing technique that combines analog signals and send it over a common channel which is of high bandwidth and high frequency range. So now this figure 6.4, you can see the FDM process. Now on left hand side you can see on the top this is some analog signals. It need not be a proper sine wave because analog need not be always a proper sine wave. It can be anything. So suppose this is some audio signal. तो म्यूजिक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई ऑडियो सिग्नल या कुछ एनालॉग सिग्नल आ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास फर्स्ट एनालॉग सिग्नल है, ये सेकंड एनालॉग सिग्नल है, ये थर्ड एनालॉग सिग्नल। These are 3 different channels from 3 different. It may be 3 telephone lines also. आप कोई 3 लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग टेलीफोन्स पे बात कर रहे हो, अलग अलग 3 लोग बात कर रहे हैं किसी और 3 लोगों से, तो 6 लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाला सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है ऊपर वाला, वो स्पीकर 6.4 में ये ट्रांसमिट हो रहा है, टॉप वाला वो किसी और 2 लोगों के बीच में हो रहा है। फिर दूसरा वाला सिग्नल कोई और 2 लोग बात कर रहे हैं ऑडियो सिग्नल पे, या कोई एफएम सुन रहा है, और तीसरा वाला भी कुछ और है। तो ये जो है बेस बैंड एनालॉग सिग्नल्स है, जो ओरिजिनल सिग्नल्स हैं, जो कि आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में है, और ये किसी ऑडियो रेंज में 400 किलोहर्ट्ज की ऑडियो रेंज में। उसके बाद हमारा जो मॉड्यूलेटर है वो क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है कैरियर फ्रीक्वेंसी को। तो अब इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 है, क्योंकि मेरा जो पूरा चैनल जिससे कि मेरा ट्रांसमिट होगा वो मल्टीप्लेक्सर जो यूज करेगा इनको वो कंबाइन करेगा। प्लस इज मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर जो डिपिक्टिंग का मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। और जो फर्स्ट वाला मॉड्यूलेटर है वो क्या कर रहा है, पहले वाले ऑडियो सिग्नल जो था मेरा बेस बैंड ऑडियो सिग्नल एनालॉग सिग्नल था, उसको कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 से सुपर इम्पोज करेगा। तो मेरा सिग्नल कैसा बन जाएगा, मेरा सिग्नल विल बी एज शोन इन फिगर। आई होप ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर। तो मेरी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसमें यहाँ पर मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेट हो गया।
कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है, F1 फ्रीक्वेंसी मेरी सेम है, लेकिन उसको सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है कि ऊपर की साइड में मेरा सिग्नल जो डैश लाइन आप ऊपर देख रहे हो, ब्लैक डैश लाइन, विच इज द एक्चुअल सिग्नल, जो मेरा ऑडियो सिग्नल जो मैं इसके ऊपर भेजना चाह रही हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं भेजना चाह रही हूँ, तो मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 रह रही है, उस पर मैंने मॉड्यूलेट कर दिया उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई एक्चुअल सिग्नल। तो माई कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 इज कैरिंग माई सिग्नल। तो मेरा जो डैश लाइन ऊपर ब्लैक डॉटेड लाइन और डैश लाइन दिखाई दे रही है, वो मेरा एक्चुअल सिग्नल जा रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, और मेरी जो कैरियर है वो क्या है, ब्लू वाली वेव है। तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैंने वेरी कर रही हूँ हर पॉइंट पे डॉटेड लाइन से, ब्लैक लाइन से। तो वो जो डॉटेड लाइन रिसीव होगी रिसीविंग साइड पे, वो मेरा एक्चुअल सिग्नल उसमें से रिट्रीव कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली मॉड्यूलेटर 2 जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी F2 पे सिग्नल 2 को मॉड्यूलेट कर रहा है, और यू कैन सी माय कैरियर फ्रीक्वेंसी में F1 मेरी कॉमन रह रही है, लेकिन मेरा एम्पलीट्यूड यहाँ पर मॉड्यूलेट हो गया है, यहाँ पर चेंज हो गया है, और वो मेरा F2 फ्रीक्वेंसी पे जो मेरा सिग्नल जा रहा है वो डॉटेड ब्लैक लाइन जा रही है, सेकेंड पार्ट है। थर्ड वाला सिग्नल देखो, वो उसमें डॉटेड लाइन चेंज हो गई है, वो पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड इट इज शोइंग मी क्योंकि F3 की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है साइन वेव का वो चेंज हो रहा है एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बेस बैंड अलोंग सिग्नल इन 3। तो जितनी भी डॉटेड ब्लैक लाइन दिख रही है आपको मॉड्यूलेटर के आउटपुट में, दे आर कैरिंग द modulated carrier frequency is carrying the actual signal. Is that clear? Then we have the demultiplexing process. So अब जब ये तीनों वेव को कंबाइन किया हमने, तीनों के उसको कंबाइन किया, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सिग्नल बन गया, दैट इज द एक्चुअल आउटपुट बाय प्लस। तो अभी जो मेरे पास सिग्नल आया वो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है फिगर 6.4 में। फिगर 6.5 में आप देखो, तो ये सिग्नल का आउटपुट था यहाँ पर 6.4 में, वो अब इनपुट है, क्योंकि वो आपने ट्रांसमिट किया चैनल पे, वही आपका इनपुट हो गया रिसीव्ड बाय द डीमल्टीप्लेक्सर। अब डीमल्टीप्लेक्सर में अलग अलग फिल्टर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को फिल्टर आउट करेंगी। तो F1 फ्रीक्वेंसी जो हमने यूज की थी इसमें मॉड्यूलेटर 1 में, F2 फ्रीक्वेंसी, F3 फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के फिल्टर्स लगे हुए हैं हमारे पास, और F1, F2 और F3 के जो फिल्टर्स हैं वो सिर्फ F1 को फिल्टर आउट करेगा, F1 फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आया, F2 फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आया उसको फिल्टर 2 फिल्टर आउट करेगा, F3 फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आया उसको फिल्टर 3 जो है फिल्टर आउट करेगा। तो 3 फिल्टर्स हमारे जो है 3 आपके आउटपुट दे रहे हैं, और उसमें से हम डीमॉड्यूलेटर वहां पर यूज करेंगे ताकि हमें एक्चुअल सिग्नल जो है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर क्या करे, कैरियर फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3 को जो है रिमूव कर रहा है, और एक्चुअल सिग्नल को उसमें से रिट्रीव करके हमें वो पास ऑन कर रहा है, हमें मतलब रिजल्ट की तरह दे रहा है। बेस बैंड अलोंग सिग्नल्स आर रिसीव्ड एज इट इज बाय द कैरियर फ्रीक्वेंसी F1, F2 and F3. So this is the demultiplexing process. So now this is example of FDM. I'll stop here after finishing this example. So we assume and we know that any voice channel or audio channel occupies a bandwidth of 4 kHz as I told you. So we need to combine 3 voice channels into a link with a bandwidth of 12 kHz. हमारी जो bandwidth है, जो actual पूरा link है, हमारा high band का link है, उसकी जो बैंडविड्थ है वो 12 किलोहर्ट्ज की है, और मेरा जो बैंडविड्थ की रेंज है, जो स्पेक्ट्रम है, वो है 20 किलोहर्ट्ज टू 32 किलोहर्ट्ज। तो इसमें मुझे 4 किलोहर्ट्ज के 3 वॉइस चैनल्स को कंबाइन करना है। तो हमें बस बताना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन्स क्या क्या होंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई भी गाढ़ बैंड नहीं है, इंटर फ्रीक्वेंसी गैप कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो मैंने कहा कि टेलीफोन लाइन का जो मेरा वॉइस चैनल था, ऑडियो चैनल, वो कितने हर्ट्ज होगा, 0 to 4 किलोहर्ट्ज रेंज होती है। तो 0 to 4 फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला 0 to 4, थर्ड वाला भी 0 to 4। तो एक्चुअल सिग्नल 0 to 4 है। मॉड्यूलेटर यूज किया हमने, उसने मॉड्यूलेट कर दिया 20 to 20, फर्स्ट वाले को किस कौन सी फ्रीक्वेंसी पे डाला, 24 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे डाल दिया उसको। सेकेंड मॉड्यूलेटर ने सेकेंड सिग्नल को किस रेंज में डाला, 24 किलोहर्ट्ज टू 28 किलोहर्ट्ज, और थर्ड मॉड्यूलेटर ने थर्ड वाले सिग्नल को 28 to 32 किलोहर्ट्ज पे डाल दिया। इस तरह से मेरा जो पूरा स्पेक्ट्रम था 20 किलोहर्ट्ज से 32 किलोहर्ट्ज का जो पूरी मेरे बैंडविड्थ थी, उसको मैंने यूटिलाइज भी कर लिया पूरे चैनल को, और मेरे 3 सिग्नल 0 to 4 किलोहर्ट्ज की जो है मैंने उसको सुपर इम्पोज करके भेज दिए। Why I am doing like this? Because
अगर मैं 0 to 4 किलो हर्ट्ज का सिग्नल सिर्फ 0 to एक ही चैनल पे भेज दूंगी, तीनों को 0 to 4 किलो हर्ट्ज, और मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करूंगी, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ऑल दीज आर इन द सेम फ्रीक्वेंसी, तो मेरे जो सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे, मैं तीनों को मैं 20 to 24 किलो हर्ट्ज की रेंज में डाल दूंगी, तो क्या होगा? मेरे सारे सिग्नल्स जो है मिक्स हो जाएंगे, नॉइज क्रिएट करेंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट द सिग्नल। तो हमें हर एक की फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज करनी है, ताकि मेरा सेम सिग्नल जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आए, और मैं उनको अलग अलग जो है सेग्रीगेट करके रिसीव कर सकूँ। सो देयर आर द रेंज इज 12 किलो हर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ, बट 20 to 32 किलो हर्ट्ज की रेंज में हमें उनको सुपर इम्पोज करना है। तो हमें सिर्फ 0 to 4, 4 to 8 और 8 to 12 नहीं करना है, बिकॉज माई कैरियर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इज इन द रेंज ऑफ 20 to 30 किलो हर्ट्ज। तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा और मॉड्यूलेटर के थ्रू उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ 0 to 4 किलो हर्ट्ज, नाउ इट इज 20 to 24 किलो हर्ट्ज। Instead of another 0 to 4 kilohertz signal, I'll be superimposing it onto 24 kilohertz to 28 kilohertz of frequency, and third one to 28 to 32. So this is how demultiplexing will. This was the multiplexing. The shift and combine. This was the multiplexing part. The upper part is figure 6.6. Lower part is showing you the demultiplexing. So मेरे को सिग्नल रिसीव हुआ 20 to 32 किलोहर्ट्ज की रेंज में, तो मैंने बैंड पास फिल्टर लगाया जो कि फिल्टरिंग कर रहा है। 24 किलो हर्ट्ज में फर्स्ट सिग्नल आ गया, 24 to 28 नेक्स्ट सिग्नल आ गया, 28 to 32 नेक्स्ट सिग्नल आ गया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डीमोड्यूलेटर दोबारा से लगाया। उससे पहले मैंने मॉड्यूलेट की फ्रीक्वेंसी को, तो अब डीमोड्यूलेट करूंगी और दोबारा से उसको चेंज करके मुझे एक्चुअल सिग्नल रिसीव हो जाएगा, उसको मैं टेलीफोन लाइन पे पास कर दूंगी। तो एक्चुअली 6 people are communicating over the same audio range up to 4 kilohertz. तो 3 टेलीफोन यहाँ पर कनेक्टेड है, 3 एट द एंड रिसीवर कनेक्टेड है। तो पहले वाला जो टेलीफोन है वो एंड साइड पे फर्स्ट टेलीफोन से कनेक्टेड है, सेकंड वाला सेकंड से कनेक्टेड है, थर्ड वाला थर्ड से कनेक्टेड है। तो साइमल्टेनियसली अब जो टेलीफोन लाइन आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के बीच में एक पर्टिकुलर लाइन आपने बिछा दी है और वो पूरी की पूरी डेडिकेटेडली उसी के लिए, ऐसा नहीं है। वहां पर आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहे हो और आपका हायर फ्रीक्वेंसी का जो लिंक है उसी पे एक ही साथ बहुत सारे लोग बात कर पाते, ठीक है। दैट्स व्हाई नाउ यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हम नॉर्मल टेलीफोन पहले यूज करते थे, ओल्डर टेलीफोन सिस्टम में जब हम लैंडलाइन यूज करते थे, तो हमारा इंटरफेरेंस क्यों आता था? व्हाई वी वर एबल टू हियर द क्रॉस टॉक्स, हमारे पास क्रॉस टॉक्स क्यों होते थे ना, और लोगों की बात क्यों सुन पाती थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास गार्ड बैंड से उसके बीच में जैसे 24 किलो हर्ट्ज पर अगर मेरा सिग्नल गया तो दूसरा सिग्नल भी 24 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी के बीच में गार्ड बैंड इस वजह से इंटरफेरेंस हो रहा था। तो अगर पहले वाले का थोड़ा बहुत कुछ ऑडियो रेंज चेंज हो गई है, तो वहाँ पर जो इंटर फ्रीक्वेंसी गैप जो था, जो फ्रीक्वेंसी जो मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो क्रॉस टॉक आई वाज एबल टू हियर द क्रॉस टॉक्स। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। कहीं पर आपकी मिक्स हो रही थी, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू रिसीव अदर सिग्नल्स आल्सो बिकॉज़ द फ्रीक्वेंसी चैनल वाज कॉमन, वी वर शेयरिंग द channel, say common frequency channel. Now next example in this regard is example. Ma'am, your voice is breaking. There are 5 channels, each with 100 kilohertz of bandwidth. I'm extending for 5 minutes because I know Tina ma'am is on leave. Is that okay with everyone? Because we started late due to some technical glitches. Or do you have any other class scheduled now? Students? Yes, ma'am. We have one meeting. मैम हमारी मीटिंग है सीनियर्स के साथ। Ma'am, we have a meeting. Hello? Do you have any other class? नो मैम क्लास नहीं है, हमारी सीनियर्स के साथ मीटिंग है अभी। ठीक है। So I'll finish these examples and then we can take it up in next class tomorrow. Okay? So I'll discuss 2 examples. So example 6.2, 5 channels each with 100 kilohertz of bandwidth are to be multiplexed together.
what is the minimum bandwidth of the link if there is a need for a guard band of 10 kilohertz between the channels to prevent interference? Now, I just talked about interference, the crosstalks we used to hear in case of landline phones. So now, to remove that interference between the channels, we have a guard band of 10 kilohertz in between each frequency channel. Okay. So अगर मेरी टोटल बैंडविड्थ हर चैनल के लिए मुझे 100 किलोहर्ट्ज रिक्वायर्ड है और मेरे को 5 चैनल चाहिए 100 किलोहर्ट्ज के ही, हर एक चैनल की बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए और बीच में 10 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड भी होना चाहिए. तो अगर 5 चैनल्स हैं तो 2 इंटर चैनल गैप कितना होगा? 4 गैप्स हैं, उनको फिल करने के लिए वी विल बी हैविंग 10 किलोहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो 4 तो सीधी सीधी कितना बैंडविड्थ होगा? 5 इंटू 100, क्योंकि 5 चैनल्स हमें इतने तो चाहिए मिनिमम विदाउट इंटर चैनल गैप. तो 500 तो ये हो गया. और 4 अगर 5 चैनल्स को हमने अलग अलग सेपरेट करना है तो 4 गैप्स होंगे बीच में जिनको फिल करने के लिए विल बी नीडिंग 10 किलोहर्ट्ज. तो 4 इंटू 10, so we'll be needing 540 kilohertz total as shown in figure 6.7. So this is one channel, this is another voice channel, this is another channel, third, fourth, fifth and channel. So we'll be needing 540 kilohertz of total bandwidth with guard bands of 10 kilohertz each in between. Now next is example 6.3. 4 data channels that are digital, each transmitting at 1 Mbps, use a satellite channel of 1 megahertz. Design an appropriate configuration using FDM. तो मेरे पास एक 1 मेगाहर्ट्ज का सैटेलाइट चैनल है जिसपे कि हमें 4 डेटा चैनल्स को जो है उस चैनल ट्रांसमिट करना है. तो दे विल बी यूजिंग FDM एंड हर एक का डेटा रेट क्या होगा? 1 Mbps का होगा. तो कैसे करना है? डेटा रेट मेरा डिजिटल चैनल का है 1 Mbps, फिगर 6.8 में देखो आप लोग. सो सैटेलाइट चैनल इज एनालॉग, हमारा सैटेलाइट चैनल एनालॉग होगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ेगा. लेकिन डेटा रेट किस में है? 1 मेगाबिट्स पर सेकंड. तो हमारा डिजिटल डेटा जा रहा है. डेटा चैनल्स क्या है? हमारे डिजिटल हैं, लेकिन हमें पता है कि FDM के जो चैनल्स हैं वो क्या होते हैं? एनालॉग चैनल्स होते हैं. तो वी विल बी यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक्स आउट ऑफ ASK, TSK, FSK और QAM. सो अगर लेकिन मेरे पास सैटेलाइट चैनल कितने का है? सिर्फ 1 मेगाहर्ट्ज का है. तो मेरे को हर चैनल, अगर 4 चैनल्स लेने तो मेरे को कितने में डिवाइड करना पड़ेगा? 250 किलोहर्ट्ज, 250 किलोहर्ट्ज, 250 किलोहर्ट्ज, 250 किलोहर्ट्ज. तो 4 एनालॉग चैनल्स मुझे 1 मेगाहर्ट्ज में से डिवाइड करने पड़ेंगे. तो 4 फ्रीक्वेंसी चैनल्स आ गए और 4 फ्रीक्वेंसी चैनल्स की जो बैंडविड्थ है वो 250 किलोहर्ट्ज ही है. तो अगर मुझे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना और मेरा डेटा रेट हाई है 1 Mbps का है और मुझे 250 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड करना है, तो आई हैव टू यूज 16 QAM 16. Why? Because 250 multiplied by 4 is 1 Mbps. 250 kbps multiplied by 4 is 1 Mbps. तो अगर मुझे 1 Mbps का डेटा भेजना है और मुझे मेरे पास चैनल जो एनालॉग चैनल है वो 250 किलोहर्ट्ज का है, तो मुझे 16 QAM यूज करना पड़ेगा क्योंकि 16 QAM में मैं 4 बिट्स पर सिग्नल भेज सकती हूँ. तो दैट वे my data rate will become 1 Mbps on each channel. Therefore, I have to use 16 QAM. So each digital channel is of each channel having 250 kilohertz. मुझे 4 एनालॉग चैनल्स में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक ही चैनल है 1 मेगाहर्ट्ज का कंबाइंड चैनल. तो मुझे 4 चैनल चाहिए तो 250 किलोहर्ट्ज तो इंडिविजुअल हो गया. ये पहले डिस्कस किया था. Each digital channel should be of 1 Mbps. और इसका मतलब 4 बिट्स मॉड्यूलेट होंगे 1 हर्ट्ज में. तो सॉल्यूशन इज 16 QAM. Therefore, we can achieve this one. Is that clear? Example 6.3 is clear to all of you? Yes, ma'am. Because FDM is analog and my data channel is digital, so I'll be using any of the 4 techniques, but I have to increase the data rate on a lower bandwidth, that is 250 kilohertz. So इसलिए मुझे 16 QAM यूज करना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा बिट्स भेज सको एक ही हर्ट्ज में या एक सिग्नल साइकिल में. So that's all for today. I'll stop here and we'll be discussing rest of the chapter tomorrow. Just wait for 5 minutes for attendance.